Hello friends, welcome to Study IQ OPC channel. In this session, we will discuss a new topic and let me tell you, Odisha become the first state जे कि artificial intelligence ଉପରେ ଗୋଟେ specific policy ନେଇକି ଆସିଛି. Okay? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଓଡ଼ିଶା become the first state ଯେ କି artificial intelligence ଉପରେ ଗୋଟେ policy ନେଇକି ଆସିଛି. କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ clarification ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବି ସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ. କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ I think in the month of February महाराष्ट्र सरकार तरफ गोटे टास्क फोर्स गठन करा जाइतिला जो माने कि देशर प्रथम स्टेट भाव में महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपरे गोटे डेडिकेटेड पॉलिसी आनिबार सेमानकर प्लान थिला बिफोर द टास्क फोर्स सबमिट्स द डिटेल ऑफ दैट पॉलिसी ओडिशा has unveiled its own policy dedicated policy for this artificial intelligence बर्तमान जो नुआ टेक्नोलोजी इवॉल्व करूची इमर्ज करूची से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो से चैट जीपीटी हो से आपण देखिथिबे जो डीप फेक वीडियोस गुडी को जो आसुची नुआ टेक्नोलोजी सहित नुआ चैलेंजेस भी आसुची ये सब जिंस को कारण टेक्नोलोजी कम्स विथ अपॉर्चुनिटीज टेक्नोलोजी कम्स विथ द कॉस्ट सो कॉस्ट को वी हैव टू रेगुलेट वी हैव टू कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटीज को वी हैव टू यूज for the welfare of the people. As far as opportunity is concerned, artificial intelligence can be used for a better governance, good governance, to address the grievances of the citizens. It can be used for the medicines, health related issues. It can be used for the data analysis or this data maintenance of data and all. So, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो हेल्थ हो एजुकेशन हो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो ये सबू जिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोभली भाव में कैन बी यूज्ड इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर एंड कैन बी यूज्ड एज ए वेलफेयर ऑफ द पीपल सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दोज डिटेल्स चलतु स्टार्ट करवा डिस्कशन as I have already told you that Odisha become the first state to unveil this artificial intelligence, a dedicated artificial intelligence policy of 2025. You can see here the objective. What are the objectives to launch this or to initiate this policy or to, unveil this policy? You can see here, as I have already told you, artificial intelligence को आमे good governance या better governance रे भी use करी परिबा. जिमती the downtrodden of the society या जो public policy या जो schemes सरकार नहीं किया सुचन the schemes which has been launched by the government that can be easily delivered to the people so through this artificial intelligence. Similarly, you would see, as I told you, it will ensure the good governance as well. And what are the parameter of good governance? The parameter of good governance like transparency, like accountability. So artificial intelligence will help us to achieve that as well. Similarly, if you see, it will help us in terms of technological development, innovation, which has a significant role in the economic growth. As India is aspiring to become a developed country by 2047, Odisha is also aspiring to become a developed state by 2036. So AI use or use of AI in different sectors of our economy is vital or crucial. Similarly, जदि आपण वर्तमान रो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखिबे दिस इज मोस्टली द डेटा ड्रिवन जेमती आमे देखिचे जो डिजिटल एरा वर्तमान चली डिजिटल एरा भितरे आमे डेटा थ्रू रे आमे कोन करूछु बेटर गवर्नेंस दे परुछु पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे परुछु जेमती आधार गोटे जिंस छोटो एग्जांपल आपण नहीं परिबे यू कैन टेक दिस एग्जांपल ऑफ आधार तो डेटा को मैनेज करिबा डेटा रो प्राइवेसी को मेंटेन करिबा एवं completely good digital infrastructure को create करिबा in that sense AI can be useful ता सहित आपण देखिबे जेमती enabling inclusive and socio economic development ultimately हमरो goal कोन inclusive growth inclusive development the last person in the society would be benefited as far as economic development is concerned so that can be possible through this application of new
or emerging technology, that is the AI. So these are few objectives why the government has launched this a dedicated AI policy. Now let's see the features. Features in the sense कि कौन aspects अछि, okay, कौन aspects अछि of this AI policy. The government will come with one dedicated AI mission, and in that mission, this mission will help us to implement or to help us to apply this AI in different sectors. Recently, you must have seen in the news, the government has made mandatory the use of AI in all offices. କାହିଁକି ନା better governance କରିବା ପାଇଁ across all departments. ତେଣୁ ये जो मिशन टी लॉन्च करा जिवो, मिशन टी जो क्रिएट करा जिवो AI mission, that will help us to apply this AI technology in those departments. Number one. Number two, it will help us to I mean जो आपनकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी अच्छी स्कीम्स अच्छी वेलफेयर स्कीम्स गुड़िक से वेलफेयर स्कीम्स रे भी आम AI को इम्प्लीमेंट करवा ता सहित आपन देखिबे सरकारी ऑफिस प्लस जो माने बेसरकारी अच्छन, लेट्स से कंपनीज, न्यू बिजनेस यूनिट्स, so chances is there this AI would be helpful for those SSGs जो माने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अच्छी, those women entrepreneurs जो माने लाखपति दीदी हमर अच्छी, so सेमान को भी गोटे टाइम रे AI would help them to flourish or to increase their business, expand their business. That can be possible. Now mechanism कौन, mechanism is important. mechanism को भली भाव रे हमें ये AI को execute करिबा, execution is another factor, important factor in fact. यदि execution part रे देखिबे हमें AI mission जो रहइबो ताकू दुईटी सेगमेंट रे डिवाइड करूछु. एक तो गोटे टास्क फोर्स रहइबो जे कि पूरा का पूरा पॉलिसी को ओवरसाइट करिबे, पॉलिसी को लुक आफ्टर करिबे, and that policy will help us cross sectoral AI adoption. That means cross sectoral यानी कि integrated manner रे को भली भाव रे different departments, for example जेमति मु आपन कहबी, suppose जेमति SSG रे जदि हमें AI को अप्लाई करिबा, obviously डिपार्टमेंट ऑफ जो आपनकर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट अच्छी, लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छी, रूरल डेवलपमेंट अच्छी, ओके. तो एमानकर गोटे इंटर कन्वर्जेंस मैनर रे, सो क्रॉस सेक्टोरल डिपार्टमेंट माध्यम रे आमे AI रो एप्लीकेशन माध्यम रे जेमति एमानकर बिजनेस को प्रॉस्पर करि परिबा, दे विल देयर प्रोडक्ट्स वुड गेट अ बेटर मार्केट, देयर प्रोडक्ट्स वुड गेट अ बेटर प्राइस, ई सब दिगरे तांकू जेमति हेल्प करा जाई परिबो. Similarly, the other part would be the implementation cell. That cell would coordinate, execute how to implement it in an efficient and effective manner. That would be the second, you would say, the branch of this mechanism or this mission, you can say. Okay. Now, the best part is what are the applications? Jadiyo objective, the kind of rough idea we have got, but let me discuss with you in detail that uses कोठी अछि, AI रो टेक्नोलॉजी को को जगह रे हमें यूज करि परिबा, that is important for us. First of all, healthcare रे कोन यूज हेई परिबो. Healthcare सबुटु I mean the greatest or the biggest is AI assisted. Suppose pandemic amar हेतिला, pandemic learned us many things. I mean we have learned many things from pandemic helped us to think of कि if another pandemic would come, एभली जदि another out pandemic आसेला, how to respond it effectively so that जो kind of जो भली भाव रे तारो spread करितला जेमति सेठु हमें the humanity को बंचई परिबा and humanity को केमति हमें सेठु survival instinct केमति हमें learn करिबा. तो ए जिनस रे भी आपण देखिबे डिजीज को रिकॉग्नाइज करिबा, डिजीज को स्क्रीनिंग करिबारे मध्य AI आपण को हेल्प करिवो. Agriculture is another important sector, and agriculture is the what we call the backbone of our country. So जदि agriculture रे हमको हेल्प करे, so agriculture beneficial हेई परिवो, agriculture profitable हेई परिवो, जो हमरो
फार्मर्स मानकर अछंती जो फार्मर्स माने अछंती सेमानकर इनकम को आमे एनहांस करि परिबा सो बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स सो एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली ये हमको हेल्प करिबा इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन आमे वर्तमान चली पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो सही टाइप रो एमाने स्मार्ट इरिगेशन हमको हेल्प करिवे Similarly, it will help us to crop diagnostics. Crop diagnostic in the sense pest attack ही पारे, crop loss ही पारे, crop damage ही पारे, ताकू केमती prevent करा जाई पारे वो, predict करा जाई पारे वो. All those things. Right time रे केमती हमें manure use करिबा, fertilizer use करिबा, scientific way use करिबा, so that overused of fertilizer हो, overuse of pesticides को केमती regulate या control करा जाई पारे वो, ई जिनसो को भी हमको देखिबार अछि. Correct? Similarly, आपण देखिबे education. Education is another जेमती आपण देखिबे now language गोटे फोकस एरिया रही बर्तमान एजुकेशन रे केवल 3 लैंग्वेज नुहे 3 लैंग्वेज पॉलिसी नुहे ता सहित 22 लैंग्वेजेस जेमती हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि देयर आर अदर सच लैंग्वेजेस अछि जेमती हमरो thousands of years of scripts गुडिक अछि मैन्युस्क्रिप्ट्स गुडिक अछि स्क्रिप्चर्स गुडिक अछि दोस कैन बी रिकवर्ड से गुडिक हमें ताकू गोटे रिस्टोर करा जाई परिबो कारण मैन्युस्क्रिप्ट्स आर आल्सो इंपोर्टेंट फॉर अस ताकू रिस्टोर करा जाई परिबो एजुकेशन रे एआई टूल्स को हमें यूज करा जाई परिबो सो दैट जो माने डिफरेंटली एबल्ड जो माने भी लेट्स से अछंती जो माने नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करि पारु नांती फॉर देम वी विल डेवलप ए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल सो दैट पर्सनलाइज्ड लर्निंग रे इट विल हेल्प देम लेट मी टेल यू कोविड टाइम रे आपण देखिथिबे it was a challenge for the students एक तो gap है गला बहुत and there I mean schools were shut down so after immediate after this covid there was a difficult for the student to grasp or to start that study all those things so if we enter into that domain of AI era or use of AI so the learning outcome would be better no coming to the climate change part again use of AI in terms of monitoring in terms of let's say weather forecasting so disaster management जो अपन करो छी weather forecasting uh, the appropriate prediction of a disaster can be the risk can be minimized or the destruction can be minimized the disaster's negative impact could be minimized so we can have a solid preparedness to mitigate the disaster so ई जो जिंस गुड़िक अच्छी AI रो application माध्यम रे ही ताको करा जाई परिबो and not I mean last but not the least let me tell you governance when we say governance intelligent citizens who या citizens जमती citizen charter हमें देखिचे ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिज्म हमें देखिचे जो आपनकर सिटीजन मानकर फीडबैक को नेकी सिस्टम को डेवलप करबा हो इस सब जिंस रे वी कैन हेल्प द एआई और वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम एआई to deliver a better governance good governance effective and efficient governance for the welfare of the people so these are the broad parameter we can say where we use the AI technology in terms of this better outcome because 2047 would be the developed Viksit Bharat and in that at least we can expect that AI technology, the artificial intelligence can be used in those areas which will be fruitful for our overall mankind. And coming to the last part of my discussion, the highlights. Highlights basically ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ AI technology ଆସିଛି and AI or new such initiative new technology comes with opportunities as well as the challenges so first if you see the opportunities हम पे नहीं किया सोची so challenges we have to minimize the risk the challenges so first we are targeting upon what ethical and responsible use of AI ethical and responsible use of AI it should be used for the good purpose better purpose okay ଯେମିତି ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करा जिवो फेयरनेस इंक्रीज करा जिवो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करा जिवो ट्रस्ट वर्दी बढ़िवो ई जिंस को हमें फोकस करबा थ्रू दिस एथिकल एंड रिस्पांसिबल डेवलपमेंट सेमती आपण देखंतु गवर्नेंस ऊपर देखुतिले वर्तमान
जो governance structure अच्छी, they are the data driven. Okay, if you see in terms of healthcare facilities, education, let's say in terms of Narega, okay, in terms of other such welfare facilities, everything is data driven. Now, if everything is data driven, you have to maintain the data privacy as well, because the Aadhaar asithila, you must aware about it. Suddenly, there was a case in PIL filed in Supreme Court with respect to the privacy of the data. So privacy should be maintained, and it's simply part of your right to life with dignity. So to maintain that privacy, what we can do, we can use this AI technology. Okay, so misuse can be controlled, regulated. Similarly, if you see strong institutional mechanism, we should have a strong institutional mechanism. For example, create oversight bodies and review panels for the AI implementation. That means a body or a kind of a task force would be there. In a frequent manner, they will review, they will monitor, and they will suggest, or they will definitely work on the updates of this, because technology is what it continuously it evolves. କିଛି ଜିନିଷ ଆଉଟଡେଟ୍ ହେଇଯାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ. So this task force or the committee or the group of member, group of experts, their job is to monitor, their job is to suggest the updation and all. Okay. Similarly, we can have the best practices across the world. We can practice, we can apply in our system as well for the betterment of our own people. Okay, we can have a collaboration with those developed countries. We can have a collaboration with international institutions, those who are using AI in terms of different fields for the welfare of the people. So in those institutions, with those countries, we can have a collaboration as well. Okay, so these are what about this artificial intelligence. So let me tell you, Odisha is the first such state who has unveiled a detailed policy of artificial intelligence and its application in different fields. Okay, so let me tell you, today is the 31st May. Okay, and this early start offer ends today. Early start offer ends today. So if you want to join with our batch, you can join here. Let me show you a detailed of this. Detail is what? Detail is 1200 plus hours of live lecture. English, English no, English Odia eta. Crux notes achi. One-to-one mentorship, handwritten notes, quick revision, special focus on Odisha specific topics, compulsory English and Odia, daily homework, weekly current affairs. ये सब जिनस 23 प्लस टेस्ट मुझे कही रखे जदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिलिम्स क्लियर करूँ तेज आपको कंप्लीट फी रिफंड हो. ओके, सिंपली कौन करार अच्छी बाय नाउ करार अच्छी बाय नाउ करके आप नंबर एंट्री करेंगे. नंबर एंट्री कलापर ओटीपी आसो, ओटीपी एंट्री करेंगे, पुणी थे बाय नाउ करेंगे, पुणी थे आप टू ऑफर्स अवेलेबल आसो सेठी एंट्री करेंगे JN लाइव कोड. JN लाइव कोड जब एंट्री करूँ यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. पुणी थे कही रखे आज हूँ लास्ट इंग्लिश ओडिया रे परिपूर्ण बैच आमर चलती. सेमती आपंकर आरंभ बैच भी अच्छी, हूँ इंग्लिश एंड हिंदी. अगेन JN लाइव कोड को यूज करेंगे टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. सेमती आमर टेस्ट सीरीज भी अच्छी एंड वी हैव दिस ऑप्शनल बैचेस एज वेल. ओके, तेणु आज हूँ लास्ट 31st मे आज हूँ. ओके, तेणु अर्ली स्टार्ट ऑफर जो मैंने वर्तमान सुधा डिसाइड करना ये करूना एटलिस्ट घंटे 2 घंटा समय नियंतु, चिंता करंतु. सिविल सर्विस करने को चाहूँगी जदि करने को चाहूँगी प्रिपरेशन को भाई भाव में करेंगे तो आम सहित प्रिपरेशन कनेक्ट हो पारे. सबु प्रकार साहाय्य आपन को करा एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली इफ यू वांट. मोर टेलीग्राम चैनल अच्छी, पीडीएफ आपन को ये मिल जाव. इंस्टा एंड फेसबुक रे मते आपन फॉलो करेंगे इफ यू वांट. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून इन फाउंडेशन क्लास. पुणी थे कही रखे JN लाइव, यूज कोड JN लाइव to get maximum discount. Thank you.